यफ़क़हू क़ौली या काशिफ़ुल कर्बिल वजहल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ कर्बिल व कर्बिल मोमिनीन वजहल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी वल नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के तमाम मुनकरों पे लानत। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा मेरी ज़ात पे खुले दिल से दरूद भेजे उसके रिस्क में कभी कमी नहीं आती। दरूद हिक्का पढ़ो ते सोना करके। इजाज़त है भाईजान, नौकरी का आगाज़ किया जाए। यहाँ पे फूल खिलते रहेंगे, मुझसे पहले और मुझसे बाद में पढ़ने वाले मुझसे 1000 दर्जा बेहतर पढ़े, और मुझ हकीर के चार मिनट में फ़ैसला कर दूंगा। 4 मिसरे आपने सुने, कितना आपने सुने और कितना मुझे पढ़ने चाहिए, 4 मिनटों में फ़ैसला कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं मौला अब्बास के अलम को आपके देख के नज़रें झुकाना, मौला से माफ़ी मांगनी, मौला के अलम को चूमना, ये क्या है? उनको मैं जवाब देने लगा हूँ, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शियों को बहुत रास है अब्बास का परचम। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शियों को बहुत रास है अब्बास का परचम। क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, हमारे लिए अब्बास है अब्बास का परचम, हमारे लिए अब्बास है अब्बास का परचम। सच ये है कि जिस पाम पे ये हाथ गड़ा है, लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है। सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं। बाबा जी, कोई अज़ादार होता है वो कहता है दूसरे अज़ादार बहन भाई से, तू कल मजलिस पे क्यों नहीं आया? जाकर ने मुसैब बहुत अच्छा पढ़ा है, फजैल बहुत अच्छा पढ़ा है। उनसे मैं कहने लगा हूँ, सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, फिर अपने आप से खुद पूछ के बेवफा तो नहीं। सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, फिर अपने आप से खुद पूछ के बेवफा तो नहीं। ये आ रही है मौला अब्बास के पंजे से सदा, हमारा हाथ कटा है मगर झुका तो नहीं, हमारा हाथ कटा है मगर झुका तो नहीं। अगर तुझे लगता है ना इतना डर मौला अब्बास के पंजे से, तू अपने घर से पता कर कोई खता तो नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, अली का अली बेटा अब्बास आ गया कूफियों और शामियों के सामने। अब्बास ने कहा, कूफी और शामियों मुझे पहचानो, मेरा नाम है अब्बास, दिखने में तुम भी इंसान दिखते हो, और ये पीछे मौला हुसैन बादशाह के खेमे हैं, दिखने में ये भी इंसान दिखते हैं, दिखने में तुम भी इंसान दिखते हो, दिखने में ये भी इंसान दिखते हैं। बाबा जी काफिया एक बार नहीं, काफिया 2 बार आया है, दिखने में तुम भी इंसान दिखते हो और दिखने में ये भी इंसान दिखते हैं, मगर इसमें अलहदा बात है कि तुम दरिंदों से बदतर हो और ये अंदर से नूर हैं। मौला अब्बास ने अपनी तलवार निकाली, करबला के मैदान में एक लकीर खींची। मौला ने कहा, दिखने में तुम भी इंसान दिखते हो और दिखने में ये भी इंसान दिखते हैं, मगर इसमें अलहदा बात है कि तुम दरिंदों से बदतर हो और ये अंदर से नूर है। मौला ने अपनी तलवार निकाली, करबला के मैदान में एक लकीर खींची। मौला ने कहा, मगर याद रखना तुम्हारे इरादे अलग हैं, यहाँ इरादे अलग, तुम्हारे लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग। लकीर खींच कर ये बतला दिया गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे अलग। किस किरदार का नाम है अली, किस बादशाह का नाम है अली, किस यूनिवर्सिटी का नाम है अली? मैं तुझे बताऊं, उमूदुल इस्लाम हो अली का मुकद्दर, वारिस मक्का हो अली का मुकद्दर, वारिस अब्दुल जलाल हो अली का मुकद्दर, मिसबाह तुजा हो अली का मुकद्दर, वो हर लाले मुश्किलात हो अली का मुकद्दर, मौलाए कायनात हो अली का मुकद्दर, वो फतेह खैबर हो अली का मुकद्दर, मालिक तस्लीम व बरसर हो अली का मुकद्दर, बाबा जी साकिया कोसर हो अली का मुकद्दर, कलीमे समा हिकमत हो अली का मुकद्दर, कहरे लाफता हो अली का मुकद्दर, शम्माए फनूस अल्लता हो अली का मुकद्दर, लैयड़े काबा हो अली का मुकद्दर, बुर्जलिनामा हो अली का मुकद्दर, वो साहिब जुल्फकार हो अली का मुकद्दर, उस्ताद जिब्राइल हो अली का मुकद्दर, मताए रज़ाए कुल्ले जलील हो अली का मुकद्दर, वो कुल ईमान हो अली का मुकद्दर, कलमातुर रहमान हो अली का मुकद्दर, यूसुफ दीन हो अली का मुकद्दर, लफ्ज़ सैयदा मुरसलीन हो अली का मुकद्दर, किताब मिंबरान सलूनी हो अली का मुकद्दर, आलिम इल्म
دونی ہو علی کا مقدر وہاں ملے منزلات ہڑونی ہو علی کا مقدر کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر کوہ طور پہ معجزہ بنے علی کا مقدر منبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر وہ کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کے کلی سے پھول بننا علی کا مقدر پھول سے دوبارہ کلی بننا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے بیٹھے کعبے میں آ جائے علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ علی ہو علی کا مقدر 3 دن کا علی کہہ رہے ادھر کو چیڑ دے علی کا مقدر اور 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر وہ ہجرت پہ بستر سجائے علی کا مقدر بے سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر ثقلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر وہ کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر وہ فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر وہ کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر وہ غازی کا بابا ہو علی کا مقدر بابا جی کوہ نقطہ ہو علی کا مقدر ہر لال مشکلات ہو علی کا مقدر مولا کائنات ہو علی کا مقدر جبرائیل کا استاد ہو علی کا مقدر خدا کا کھانا زاد ہو علی کا مقدر محمد کا داماد ہو علی کا مقدر رکس بانٹنے والا ہو علی کا مقدر اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر اور جس کا سایہ نہیں اس کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر ثقلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر رزق بانٹنے والا ہو علی کا مقدر جنت تقسیم کرنے والا ہو علی کا مقدر فرش پہ بیٹھی عرش پہ حکومت ہو علی کا مقدر من کنت مولا ہو علی کا مقدر جنوں کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر عین اللہ ہو علی کا مقدر اذن اللہ ہو علی کا مقدر وجہ اللہ ہو علی کا مقدر روح اللہ ہو علی کا مقدر وہ قبر میں جاتا ہو علی کا مقدر پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر ہجرت کی رات بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر اوے کب تک چپ بیٹھے گا میرے مولا علی کی فضیلت پر مجھ سے عقیدت سن زیر لحد جوائے فرشتے بڑے بڑے میں نے مولا علی کو پکارا پڑے پڑے منکر نکیر تھے جو ان کے قدم چومنے لگے حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا عرض نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ مالک بچے کی زبان میں مزید